আরে ঠুলো এদিকে একটু তাকাই দাদা কানে বাংলা বুঝে নে our advisor chairman, Upendra Debarma, and our advisor, Sushil Kaloy, and our advisor, JSF, Sunil Debarma, former General Secretary, our Central Committee members. Well, as we know, before the election, we have supported the Tipra Matha during the elections. And we have been working with Maharaj over 15 years back. We work together, our senior leaders work together for the betterment of the indigenous community. Today we have accepted the Greater Tripura land and for the cause for the indigenous community. We are ready to work in any kinds of work, in movement. So we have accepted and we support the Tipra Matha and Maharaja. So at this juncture now, I would like to give our time to our advisor to brief the media. Good morning, media friends of Agartala. Well, as you know, the General Secretary of TSF have highlighted our issue of being here together with you. Now, as you all know, TSF first was created in the year 1968. So since then, the first leader, Sukumoy Debarma and Navendra Jamatia, the TSF have been doing a lot and is still doing for the welfare of the indigenous people, especially the tribal people as a whole. Now, since then, their aim and objectives have been partly fulfilled, and the TSL, the organization, have always been looking for the welfare of the indigenous people. Now, on that case, TSL, now in the past days, TSL's aim and ideology was to look for the betterment of the indigenous people, and TSL also in its own constitution says that TSF can support or withdraw their support to any political party, may it be regional, may it be national, but on the interests of the indigenous people. Now here, even in our earlier days, our seniors, they have been working with the indigenous political, regional political party, and now this time also, since the last election and even when Bubagra was in the Congress, we have worked with Maharaja for a very long time, and in fact, today we would be happy to declare once again officially that we will be, the TSF will be on a move for the fight of the Greater Tripura Land movement, and we shall be supporting Bubagra and the indigenous cause in the state and as well as outside the state. I'm Upendra Debarma, advisor at TSF. Upendra Debarma. So, how will you be supporting the movement of Greater Tripura? By participating in the movements or As I have earlier mentioned, that TSF will support Greater Tripura Land movement in any type of movement, agitation, physically, mentally, morally. We will be there for the fight for our Greater Tripura. Any type of movement. so TSF has a very vast network. You know, the people of members of TSF are also in other states. So they are also driving the movement and Exactly as I have rightly said, that
we have a large network even outside India. Now, for the cause of our people, we are joining the movement. So I think there is no question of units of TSF in other states or other country not willing to be on the Greater Tripura Land movement, because this is all on our issue. Now, on our issue, we shall not compromise. We shall fight with Maharaj since he has taken the lead now for the Greater Tripura Land movement. We will not step behind for the fight in favor of Greater Tripura Land. Okay, tabuk norok ni support borno hani pana borle je Tripura mothani student organization norok da ngai nyaki onno da khai amno tei ko sari ang norok no saka TSF ni nahamu borok do pani sini borok indigenous moth ani hansa no kare ar kuno kure Maharaj ni kaham nahar mungo bini Greater Tripura Land ni hansa ni maribo sentabo Maharaj ni ringma bai sentabo Maharaj no full listen support lai. Okay. Norok ini ni yok pungjarabo media friends tokno ang hambairo norok saimano TSF Asaipro ni simi 1968 ni simi puilani president Sukumoy Deborma tai general secretary Nabendra Jamatia borong ni leadership ni simi chengi paye tabuk sakjora borok ni nahar mungno tuino jekunu jagao chini borok ni kaham samoni bagai a jaga TSF pasai pakya TSF unu kaisa political party ni organization ya dia chini own aim and ideology tongo je jaga chini borok ni kaham hukai a jaga ono TSF tongo tai unu jaga uslomani kore jeng saiman ka thangnai continuous 25 years leftist ni rule of haino TSF asuk hard sibo bo TSF tongui tongo keba sung tabuk bo TSF tongo sung ulo bo tongai sung tini hai jorao hukai sung belai na hambai sini Maharaja sini Tripura do pano sini Tripura no lead khai sungo kaisa kaham disawos kaisa kaham lamu sungo plangai khangi tongo ni bagai abagai bubag na hambai marwo bini leadership molbrum no tongtung o Greater Tripura Land ni jobabo TSF ain hai Maharaj bai tongnai Tripura motha bai tongnai tai Greater Tripura Land ni bagai sung physically mentally morally je mansa sung Tripura motha bai sung samung thangnai jeni Greater Tripura Land ni bagai social contract. In that regard, the Khansa is very much relevant, and today Maharaj will brief the success of that leaving no one behind, but bringing everyone together in the front. So may I call upon Maharaj to kindly brief the media on this very special occasions of the 100th milestone achievement. Kumkaham to everyone. I want to first of all extend my heartfelt gratitude, and I would like to extend my best wishes to TSF, Tripura Students Federation, for joining the movement for the Greater Tripura Land. Greater Tripura Land is a movement where we want every Triprasa, every individual who may not even be a Triprasa, who believes in the concept of a state which had a great history, a great future, a flourishing career, and a wonderful bonhomie between friends, communities, irrespective of religion and ethnicity. I am very happy because I have been associated with TSF since 2002. When I was not even in Tripura, I have worked with TSF, and after 19 years, TSF and
our organization Tipra Motha have jointly decided to fight for Greater Tipraland movement. TSF has a great history. It was formed in 1968, 67 with an ideology to improve upon the Tiprasa students. And let me tell you that till the time we do not come together for the benefit of our Doha, our community, we will always suffer. TSF has its units not only in Tripura, TSF has its units all over India. They also have a unit outside India. And I will appeal to all of these units outside Tripura and outside even India, which are some are there in Bangladesh as well, to morally to honor the Samaj. So, and our state government is also giving an allowance, monthly allowance to the Samaj. So, are there the same people who are you going to, or there are people? तो बेनिफिशियरी सिलेक्शन क्या एक ही होगा? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे ऑकराज हैं, जो हदा है, जो चांताएं हैं, कास्को है, वो लोग बेनिफिशियरी नहीं है. उनका अधिकार बनता है कि हम लोग उनको सम्मान दें. स्टेट गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था आज से 2 साल पहले, अभी तक 1 रुपया नहीं दिया. हमने बाय सर्कुलेशन अपना ऑर्डर पास कर दिया है. हम लोग अगले महीने से ये डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्टली करेंगे. और क्योंकि अगर अपना तिप्रासा आइडेंटिटी और कल्चर को प्रिजर्व करना है तो पॉलिटिकल मायने से नहीं देखना पड़ेगा. जो कम्युनिटी चूज करेगा, कौन उनका औहदा है, उनका औखरा है, उनका आदौन है, उन्हीं को हम देंगे. हम अपनी तरफ से किसी को सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जिस दिन पॉलिटिकल पार्टी सिलेक्ट करके किसी को बेनिफिट देने लगे, उस दिन राजनीति शुरू हो जाती है. मैं चाहता हूं कि हमारे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन, जो कल्चरल एक इंस्टीट्यूशन है, उनको एक सम्मान दिया जाए और एक स्टाइपेंड दिया जाए. मेरे संग मेरे सीएम यहाँ में बैठे हैं, वहां में पीएम्स बैठे हैं. हमने डिसीजन लिया है कि एवरी community elder who has an elder in the traditional setup will be given a monthly stipend starting from 1st of September. और ये हमने खुद किया है. स्टेट गवर्नमेंट ने अभी तक डिसीजन लिया है लेकिन किया नहीं है. हमने डिसीजन भी ले लिया है, अमाउंट भी फिक्स कर दिया है और अब हम प्रोसेस भी शुरू कर रहे हैं और हमने टारगेट भी रख दिया है कि सितंबर से ये काम शुरू हो. बोगरा जो संताई गालिम जो लोग है वो 14 देवता में जो पूजा कर रहा है, उनके लिए आपने कुछ सोचा है क्या? उनके लिए मैंने अपने तरफ से कि ये 14 देवता में जो होता है वो रॉयल फैमिली की तरफ से भी होता है. मैंने उनको अपने तरफ से मैंने एक प्लान बनाया है. राजमाता भी त्रिपुरा में है. आने वाले दिन में उनके लिए भी मैं कुछ करने वाला हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि देखिए, त्रिपुरा को सब लोग बोलते हैं कि बैकवर्ड. तिप्रासा इज नॉट बैकवर्ड. तिप्रासा वाज अ किंगडम. तिप्रासा हैज अ हिस्ट्री. तिप्रासा इज अ सिविलाइजेशन. तो अगर हम लोग अपने तिप्रासा लोगों को इज्जत सम्मान, हमारे इंस्टीट्यूशंस को सम्मान नहीं करेंगे, जो ट्रेडिशनल सेटअप है, तो बाहर के लोग कैसे सम्मान करेंगे? इसके लिए ये जो कल्चर खत्म किया गया, कम्युनिस्ट ने खत्म किया गया, क्लब को रिप्लेस करके, आज जो हमारा सिस्टम इतना डिप्रिशिएट हुआ है क्योंकि एक पूरा मूवमेंट था कि हमारे पूरे ट्रेडिशनल सेटअप को खत्म किया जाए. आज इंडिया का जो सम्मान आता है वो सिर्फ आईटी से नहीं आता है, हमारे इतिहास से भी आता है. आज जो पूरा, अगर आप बंगाली कल्चर के बारे में बोलेंगे तो सिर्फ आज क्या हो रहा है उससे नहीं आता है, उनके इतिहास से आता है, उनके किताब से आता है, उनकी हिस्ट्री से आता है. अगर आप तमिलनाडु जाएंगे तो उनकी हिस्ट्री से आता है. आप जब इंग्लैंड जाएंगे तो उनका हिस्ट्री से आता है. आप अगर चाइना को देखेंगे तो उनकी हिस्ट्री से आता है, माओ से नहीं आता है. तो हमारा भी इतिहास है, हमारा भी एक कल्चर है. वेदर इट इज गालिब, वेदर इट इज कास्काउ, वेदर इट इज
Kshatriya Samaj, whether it is Hoda, whether it is Chantai, whether it is Chaudhary, whether it is anybody, we have to start respecting our traditional system, and that is something I am following. स्टेट में हो रहा है, मैं अपील करता हूं स्टेट गवर्नमेंट टू काइंडली लुक इनटू इट एंड रिड्यूस द लेवल ऑफ वायलेंस. पहले से इकोनॉमी खराब है, पहले से कोविड से सिचुएशन बहुत प्रॉब्लम में है, और इस तरीके से वायलेंस होने से त्रिपुरा में कोई इन्वेस्ट भी नहीं करेगा, कोई बिजनेस भी नहीं आएगा. और इस वायलेंस से हमको क्या मिल रहा है? अगर इलेक्शन होना है 2023 में तो 2023 में बात कीजिए, लेकिन वायलेंस अभी से शुरू हो जाएगा तो नुकसान पॉलिटिशियन को कभी नहीं होता, कोई नेता को नुकसान नहीं होगा, नुकसान सिर्फ आम जनता का होगा. तो ये ड्यूटी बनता है, होम इज अंडर द स्टेट गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट देयर इज पीस and there is law and order. I am making it very clear. Law and order has to be maintained in Tripura, and the image of Tripura has to be maintained. And ये बात आप त्रिपुरा मोथा से चेयरमैन नए हो, ये आप बात छोड़ दीजिए कि अलायंस किसके साथ होगा किसके साथ नहीं होगा. हमारा एक डायरेक्ट लाइन है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के लिए, और जो हमारे ग्रेटर त्रिपुरा लैंड को अग्री करता है राइटिंग में दे, अगर नहीं देता है तो हम अकेले पूरे इलेक्शन में लड़ेंगे. आज का त्रिपुरा सा पैसे के पीछे पद के पीछे नहीं भागेगा, त्रिपुरा मोथा पैसे पद के पीछे नहीं भागेगा. वी आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज. मुझे चीफ मिनिस्टर नहीं बनना है, मुझे होम मिनिस्टर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर नहीं बनना है, मुझे ग्रेटर त्रिपुरा लैंड चाहिए, और उस इश्यू में वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज. वी वांट समथिंग इन राइटिंग फ्रॉम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी from the government of India or whoever would like to come in front and talk to us. But my last question, in certain parts of the state, the NLF is trying to respect the rule possibly. I mean, they are trying to revive their organization and all. So, what would be your message towards the people so that they don't Control Nagarik Suraksha Manch, control Amra Bangali, and you will not have the other side misguiding other people. It takes two hands to clap. It takes two hands to clap, and we know who are the people who are provocating. Has the murderer of Biswajit Parma been arrested? Has the murderer of Mantri Lal Kaiping been arrested? Has Pindulal Chakma's murderer been arrested? So, जो माधव बारी में हुआ उसमें कोई जस्टिस हुआ है? So, my message is there is wrongs on both sides. But if you can control these elements which are provocating one society, the other society will react. I have always spoken for peace, whether it is Tiprasas or Bengalis, Chorais or Liams, Muslims and Hindus and Christians. We are secular. We believe in no discrimination of any religion. We believe in inclusivity, but the government has to now stop these organizations which are fringe elements, which are creating ethnic divide between communities. Tripura Motta has not spoken against any community. We have only spoken for the constitutional rights of the Tripura people. We have not spoken against any community. जब से हम पावर में आए हैं, not one act of violence has happened against any non-Tiprasa community in EDC. So ये जो वहम फैलाया जाता है, ये एक एलिमेंट है त्रिपुरा में जिनका राजनीति रहता है. जब कोई तिप्रासा डिमांड करे तो उनको कॉम्युनल बनाओ, जब कोई और करे तो उसको राष्ट्रवादी बनाओ. इसको कर्टेल करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को कदम उठाना चाहिए.